Good morning to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to Knowledge Online Education. I am your educator from Commerce Zone. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see Standard 12th, Chapter number 2, Indicators of Growth and Development. As you all know, we have already finished part 1 of the chapter. So before starting the today's portion, let us revise what we have seen on the previous portion. So students, previously we have seen about the introduction of the chapter of economic growth and development. So indicators of growth and development represent us up for the economic growth and the development. So what was economic growth and what was economic development? How it has been started up, that we have seen on the previous portion. So let us do a short revision of the portion. So as you all know student, previously we have seen about the introduction. In that we have seen that after the Second World War was been finished up in the year 1939 to the gap of 1944. So 1939 से 1944 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा गया था, in that short period we have seen that many countries have tried to attain the economic development, economic growth. So to you the word may be similar. What is economic growth and what is economic development? Both words can be known as a similar word for you. But apart from all this similarity, in economics there is a wide difference in the economic growth and the economic development. तो हमने इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ देखा था, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही सिमिलियर लगने के बावजूद ये सिमिलियर नहीं है. कैसे नहीं है? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स अ ग्रोथ विच इज नोन एज अ स्टेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग स्लोली एंड स्लोली इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ, while economic development means to achieve and to grow to the level of that portion is considered as economic level or development in the economics. Economics में अगर हम बात करते हैं, economic growth का मतलब धीरे धीरे जब हम एक चीज को अटेन करने के बाद धीरे धीरे उसी की स्टेबिलिटी में जब आगे बढ़ते तो इसे इकोनॉमिक ग्रोथ माना जाता है. जबकि डेवलपमेंट मतलब एक जो मेजरमेंट दिया है उस तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है. So, what is economic growth and which countries go for the economic growth? So, economic growth is a growth which is always tried to be analyzed or has to be achieved by the portion of the developed country. So, developed countries जो होते हैं वही economic growth को attain करने की कोशिश करते हैं. So, what about the underdeveloped country, which means the countries which are known as the developing country? So that countries like India, so if you are considering it goes for the economic development. So जो भी developing कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस पाने की कोशिश करती है इकोनॉमिक्स के अंदर उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है. यानी स्टिल इट इज डेवलपिंग, डेवलपमेंट तक पहुंचने के बाद ही वो इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे कर सकता है. दिस वाज द इंट्रोडक्शन. इन दैट द वाइटल रोल इज प्लेड बाय द portion of the factor of production. You know that in economics we see factor of production in a very brief manner. What are the factor of production? Land, labor, capital and entrepreneur. जब इसका constant supply देखा जाता तो उस टाइम पे इसके अंदर धीरे धीरे जो राइज देखा जाता है और एक लेवल के बाद जो राइज देखा जाता है उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है. बट वो लेवल तक ही जब नहीं पहुंचता है और कोई कंट्री उस लेवल तक पहुंचने की जब कोशिश करता है उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है. दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 2. बट आफ्टर दैट वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? आफ्टर द इंट्रोडक्शन यू मस्ट बी लिटिल क्लियर व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ.
In short, if you are seeing economic growth means after attaining the economic stability, when a country tries to do more and more progress of their country, then it is considered as economic growth. In short, हमें एक level होता है. For example, मुझे 90% सिक्योर करना है एग्जाम के अंदर. इफ आई सिक्योर द 90%, 90 का 91 करना है, 92 करना है, 93 करना है, इस तरीके से जो सेटिस्फेक्शन और बढ़ता जा रहा है उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है. जबकि मुझे 90 तक पहुंचना है, स्टिल आई एम ऑन 60 से 90 वाला जो प्रोसेस होता है उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है. सो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ नोन एज? इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज नोन एज अ क्वांटिटेटिव चेंज. व्हाई इट इज नोन एज अ क्वांटिटेटिव change? Because in that we always see number of production increased in an country. जब हम per capita income, national income और number of total output production की इंक्रीमेंट देखते हैं तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ माना जाता है और वो हर साल इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा एक कॉन्सेप्ट देखा जाता है. So this was been seen up on the last portion. Rather that we have seen about the definitions of the economic growth. So in economic growth again we have seen the same definition that whenever there is a increase in the quantum means the quantity, numbers of total output in all the sectors, all three sectors, primary, secondary, industry, all the sectors, rather than that increase in the national income and per capita income is considered as economic growth. In short, जब भी मनी मॉनेटरी वैल्यू में या टोटल प्रोडक्शन में जब नंबर ऑफ इंक्रीज देखा जाता है हर साल, उस इंक्रीज को ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं. After that, we have seen about the limitations of economic growth. In economic, it is very common that when we are seeing one topic, in that always there is some negative or barrier or limitation point. Even in economic growth also, we have seen 4 limitations in a very detailed manner. First of all, the economic growth always consider the quantitative change only. Qualitative change are being ignored by the economic growth. नंबर में कितना चेंजेस आ रहा है वही देखा जाता है, बट लोगों के बीच में कितना चेंजेस आ रहा है क्वालिटेटिवली, ये चीज के बारे में जरा भी देखा नहीं जाता है. Next, if you are seeing in economic, it is a very narrow portion. It only sees rise in the national income and total production. इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही छोटा है. क्यों? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टोटल इनकम में कितना इंक्रीज होता है और उसके आउटपुट में कितना इंक्रीज है यही देखा जाता है. इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली डेपिसिट्स द नंबर ऑफ राइजिंग टोटल इनकम and the production. It never sees the psychological and institutional factor of the human being. Even economic growth के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट दिखा जाता है, जबकि लोगों की इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल लेवल और उसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसे डेवलप हो रहा है पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. Rather than that, in economic growth, it is always considered on the monetary factor and output. It never understands the welfare of the people. Again, यहाँ पे 4th पॉइंट पे यही बताया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग पे ध्यान देता है, लोगों के बीच में टोटल आउटपुट कितना देखा गया, उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना हुआ, इनकम कितना देखा गया, उसी के ऊपर बेस किया जाता है, जबकि लोगों की कितना वेलफेयर हो रहा है, भलाई कितना हो रहा है, इसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट ये काम नहीं करता. तो यहाँ तक का टॉपिक लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड. सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फर्दर पोर्शन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन अ वेरी डिटेल मैनर फ्रॉम line to line. So students, let us move on to the further portion of the video. So students, now let us move on with the further portion of the video. So let us start up the today's topic, meaning of economic development. So as usual, I am going to read the paragraph, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. We need to understand as to what economic development actually means. When economics of Asia, Africa and Latin America have become proactive in achieving economic development. Economic development is a process which is continuous to achieve economic well-being. Hence, the term economic development has a very wide meaning which includes economic growth, economic welfare and economic process. So first of all, before knowing what is economic development
Actually, we have to know what is the proper meaning of economic development, for which we have to know what is economic of Asia, what is economic of Africa, what is Latin America's economic, rather than what they have been done on what proactive means actively what they are doing to achieve the economic development. In short, we can say that economic development is a process which is continuously working, and even to achieve well-being, economic well-being, to achieve that they are being proactively working on it. So hence we can say that the economic development is a very wide meaning which includes the economic growth also, welfare also, and economic progress also. So now, according to your language Hindi, I am going on, listen it out carefully. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑफ एशिया क्या होता है, अफ्रीका क्या है, और लैटिन अमेरिका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एक्टिव होके क्या कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए वो क्या क्या प्रोसेसेस को देखे या अपनाए जा रहे, उसके लिए हमें ये पहले ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस माना जाता है, एक ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। उसके अलावा जब एक इंसान एक इकोनॉमिक वेलबींग को अटेंड करता है, उसी तरीके से जब एक कंट्री एक इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी तक पहुंचने की जो कोशिश करता है उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है। इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब एक वाइड यानी बहुत ही बड़ा मीनिंग होता है। अगर हम डेप्थ में बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अंदर एक पार्ट माना जाता है। इकोनॉमिक वेलफेयर, लोगों की पैसों के रूप में वेलफेयर होना, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक में प्रोग्रेस होना, धीरे धीरे एक कंट्री का इकोनॉमिक में प्रोग्रेस देखा जाना, उसे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाता है। यानी जो चीज़ में तीनों चीज़ें इंक्लूड होता है उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Even in economic development, there is an increase in the real national income and real per capita income. But economic development is not just about quantitative change, but also about qualitative change. Development is different from growth. It is a multi-dimensional process. During the process of development, economic and social structure of the economic changes. So now, before moving for the further portion, we will see the meaning of this portion. So in economic development, if you are seeing, the real national income also increases, the per capita income also increases, but it does not deal with that quantitative change only, but it also deals with the qualitative changes. So development is little different from the growth. So why it is different? Because it is a multi-dimensional process. Rather than that, while you are having the economic development process, in that the economic and social structure both change in the country. सो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें नेशनल इनकम भी बढ़ता है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करता है। बट ये क्वांटिटेटिव चेंज माना जाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटेटिव चेंज भी देखा जाता है। क्वालिटेटिव चेंज मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा ग्रोथ से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में ही नहीं, वो चारों डायरेक्शन पे काम करता है। वो पर कैपिटा इनकम को भी रेज करता है, रियल नेशनल इनकम को भी रेज करता है। इसके अलावा ये तो इकोनॉमिक की बात हुई, उसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर, लोगों की बिहेवियर, थिंकिंग, उनकी एजुकेशन, उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी काम करता है। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर दोनों के ऊपर काम करने की वजह से इसे मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस माना जाता है। Let us move on and see the further portion. Along with economic process, progress takes place in the society too. Generally, the structure of national income also undergoes a change. The contributions of agriculture as a percentage of the total national income decreases. The contributions of
industry and service sectors increases. The disguised unemployment in agriculture sectors get employed in other sector. Modern technology is being implemented due to which time and money is saved. New seeds are innovated. As a result, the structure of institution pertaining to production and distribution changes. Poverty, unemployment, and inequalities falls due to such systematic change. So in short, if you are seeing, the social structure also goes on a change rather than the contribution of agriculture in the national income, it is decreasing, but the contribution of the industry and the service sectors is increasing, by which the disguised unemployment is seen in agriculture sector, which gets the employment in other sectors. So modern technology is playing a vital role in economic development. Rather than that, new seeds are coming, you know that hybrid seeds are coming, by which the institutional pretending productions has been increased up. In this manner, anyhow, the poverty, unemployment and the inequality, all these things are taking a change in a very systematic manner. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारा जो नेशनल इनकम है इसमें भी एक चेंज देखा जा रहा है. अगर आप पहले की बात करते हो तब एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें ज़्यादा नेशनल इनकम जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा था, बट अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर के जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो शेयर्स कम हो रहे और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के शेयर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे, जिससे जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में देखा जाता था वो एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे जॉब मिल रहा है. इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे समय भी बचा जा रहा है और कहीं ना कहीं पैसे भी बच रहे. रेदर देन दैट एग्रीकल्चर के अंदर भी नए नए सीड्स देखने को मिलते हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक चेंज देखा जा रहा है. इस तरीके से हम कहीं ना कहीं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी जो सोशल स्ट्रक्चर में देखा जाता है उसमें भी एक सिस्टमेटिक चेंज देखने को मिल रहा है. सो इन शॉर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं चारों फैक्टर्स में काम करता है. इकोनॉमिक में भी काम करता है, सोशल में भी करता है और हमारे सारे डेवलपमेंट के जो बैरियर्स है उसे हटाने में भी काम करता है. इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस या क्वालिटिव चेंज भी माना जाता है. हियर वी आर कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लेट अस मूव ऑन विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So here three definitions are being given up. First definition, economic development is a multi-dimensional process given by Michael Todaro. As we discuss, economic development deals with the economic process and rather than that social structure, then adapting the social problems. That why it is considered as multi-dimensional process. It deals with the quantitative change also and qualitative change also. That's why it is said as multi-dimensional process. यहाँ पे इकोनॉमिक कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक के साथ भी डील करता है, सोशल स्ट्रक्चर के साथ भी डील करता है और जो प्रॉब्लम्स आते हैं डेवलपमेंट में उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में भी काम करता है. तो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव चेंज और क्वालिटेटिव चेंज दोनों चेंज यहाँ पे देखने की वजह से इसे मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस माना जाता है. सेकेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. The distribution of income does not further increases the inequalities and there is a continuous rise in the real per capita income of the country for a long period of time. GM मेहियर के हिसाब से अगर देखो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं they are not increasing, they are at stable. Even decreases is coming but increasing is not coming. For example, last year poverty line के नीचे अगर 10,000 लोग थे तो इस ईयर वो 12,000 बढ़ेगा, इसका मतलब पॉवर्टी बढ़ा. बट यहाँ पे पॉवर्टी बढ़ता नहीं है, पॉवर्टी को कम किया जाता है. रेदर देन दैट डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटीज देखी गई थी वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होते हुए नज़र आता है. उसके अलावा
कंटिन्यूस पर कैपिटा इनकम और रियल इनकम के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज जब देखा जाता है उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है. नेक्स्ट, it is given by G.M. Marier. So next it is Matchlup's definition. Let us see what is the definition of Matchlup. Economic development is a process which increase the factor of production and create change in the technique of production due to which per capita income continuously increases and the standard of living continuously rises irrespective of whether population remains constant or increases. Matchlup. So according to Matchlup, if you are seeing economic development का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वजह से और उसके अंदर जो टेक्निक्स होते हैं उसके अंदर जब हम चेंजेस लाते हैं उस रीज़न के वजह से प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होता है, पर कैपिटा इनकम में भी इंक्रीज देखा गया है, उस वजह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता जा रहा है, बट उसके साथ साथ पॉपुलेशन बढ़े कि उतना ही रहे, उसके साथ साथ सब जब ये सारे फैक्टर्स बढ़ते जाते हो तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है. सो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बीइंग कंप्लीटेड. सो नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Number 1. Economic development is a continuous process. Economic development is a slow but strong process in a determined order and direction. In any country, development is process which is easy to start but difficult to maintain. The process of development is usually fast initially but slows down over a period. So इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं वो बहुत ही स्लो एंड स्ट्रांग होता है, प्री डिटरमाइंड यानी पहले से जिस तरीके से सोचा है उसी ऑर्डर में और उसी डायरेक्शन में काम करता है. इन एनी कंट्री, कोई भी कंट्री की अगर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होता है वो शुरुआत में तो बहुत ईजी होता है बट धीरे धीरे उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ goal that I have to score 90% in 12th standard, at the initial stage means at the starting of the 12th standard you go up with the craze that I have to study in this time, I have to do this thing, I do revision this and that, but slowly what happens, slowly you go down by your goal. In the same manner, when the economic development has been seen up at the starting pace, it is very easy to start but very difficult to maintain up. Rather than that, the process of development usually initial time पे जो है बहुत ही स्पीड में देखा जाता है बट धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाता है और एक लंबे टाइम तक वो धीरे धीरे ही जा रहा होता है. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस इस तरीके से माना जाता है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द सेकंड पॉइंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज टेक प्लेस. In economic development, output increases which is quantitative and due to research the qualitative of the product improves which is qualitative. But there is more of qualitative improvement. So economic development की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे quantitative output प्रोडक्शन में जैसे लास्ट टाइम 100 बना, इस टाइम 120 बनना चाहिए, ऐसे नंबर ऑफ चीज़ें जो होती है प्रोडक्शन का वो भी इंक्रीज होता है. उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंक्रीज की जानी उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है. इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंज को देखा जाता है बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की नंबरिंग इंक्रीज करने से अच्छा क्वालिटेटिव चीज़ें कैसे पहुंचानी चाहिए लोगों तक उस चीज़ के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा काम करता है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द थर्ड पॉइंट, चेंज इन डिमांड. There is rise in the income of the people due to development change that tastes in the initial stages of development. The demand for basic or primary goods rise, but subsequently there is a rise in the demand for comforts and luxurious goods. तो धीरे धीरे जो इनकम होता है उसके अंदर राइज देखा जाता है. जो भी लोग होते हैं उनको डेवलपमेंट के अंदर एक चेंज देखा जाता है. जैसे डेवलपमेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लास्ट फ्यू ईयर्स बैक इफ़ यू सी 10 years back there was no technology awareness, people were not aware of anything.
फिटनेस बैंड नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था, तो लोगों को वो चीज़ें के बारे में पता नहीं था, तो वो चीज़ अफोर्ड भी नहीं करते थे और उसके लिए वो टेस्ट उस चीज़ के लिए रखते भी नहीं थे। बट जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया, वैसे वैसे हमारा टेस्ट बदलता गया। वैसे ही लोगों के बीच में जब डेवलपमेंट देखा जाता है तो उनकी टेस्ट भी धीरे धीरे बदलने लगता है। इनिशियल स्टेज, शुरुआत के टाइम पे जो डेवलपमेंट का बेस होता है, वहाँ पे लोगों को बेसिक और प्राइमरी गुड्स की ज़रूरत होती है। फिर धीरे धीरे उनकी जो डिमांड है वो लग्जरियस गुड और कंफर्ट गुड के लिए देखा जाता है। Fourth point is labor become more dynamic. Development leads to increase in education of labor which makes him more dynamic. धीरे धीरे जब डेवलपमेंट देखा जाता है उस वजह से इंक्रीज देखा जाता है एजुकेशन के अंदर। जो आजकल के एम्प्लॉय है, यू नो दैट वी आर क्रैकिंग अ जोक कि मोमोज बेचने वाला कहीं ना कहीं MBA होता है। वी से दैट ना, वाई? बिकॉज पीपल आर बीन एजुकेटिंग। धीरे धीरे वो एजुकेशन को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे अपने स्किल्स डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से जो लेबर होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले कंट्री के अंदर, वो और डायनामिक होते जाते हैं और उसके वजह से कहीं ना कहीं लेबर्स की स्किल्स की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक मेजर चेंज देखा जाता है। एंड दैट मोमोज वन वॉज अ क्रैकिंग जोक, ओके? सो डोंट कंसिडर इट एज अ रियल वन, just to make you free from this portion I cracked that portion. But literally if you're seeing people, they are more educated and they are having skills in the economic development. Increases capital formation. Development leads to increase in demand for different commodities. New enterprises come forward due to which the rate of interest and the capital formation increase enormously. सो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डिमांड में इंक्रीज करता है और लोगों के बीच में अलग अलग कमोडिटीज़ के बारे में पता चलता है। जैसे आई सेड फिटनेस बैंड, नाउ वी आर हैविंग फिटनेस बैंड ऑफ सो मेनी कंपनीज। आफ्टर दैट वी गॉट ईयरपॉड्स, पहले ईयरफोन्स आते थे और अब ईयरपॉड्स आने लगे, उसके बाद अलेक्सा। सो दिस टाइप ऑफ न्यू टाइप ऑफ कमोडिटीज़ आर कमिंग इन द मार्केट एंड पीपल आर हैविंग द डिमांड इंक्रीज फॉर सच कमोडिटीज़ एंड ड्यू टू दैट नए नए एंटरप्राइजेज यानी नए नए बिजनेसेस जो है अपनी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं और अपना कैपिटल फॉर्मेंस को अलग अलग तरीके में इन्वेस्ट करके और नई नई चीज़ों को मार्केट पे लाते। वो कब हो पाता है? जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक कंट्री काम कर रहा हो तब। Now next point is change in technology. There is shift in dependence from fire and water based technology to coal and iron based technology which result in faster development. अब देखो शुरुआत के टाइम पे जब हमें कुछ चाहिए होता था, so the dependence of the shift, जो भी चीज़ें बनाई जाती थी उसके लिए फायर चाहिए था, वाटर चाहिए था, तो उस टाइप का टेक्नोलॉजी देखा जाता था। बट अब वैसा नहीं है, अब टेक्नोलॉजी के अंदर कोल आ गया, आयरन आ गया है एंड इवन यू कैन सी दैट फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अ शॉर्ट फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर शुरुआत पे कैसे होते थे? फर्नीचर शुरुआत पे वुड्स पे बनते थे और अदर दैन उसको उठाने के लिए एकदम ताकत चाहिए, फिजिकल एंडोरेंस चाहिए तभी हो सकता था। नाउअडेज यू नो दैट हाइड्रोलिक पोर्शंस आर कमिंग अप जिसके लिए हमें फिजिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आयरन और स्टील रॉड इज कमिंग बाय विच वी कैन स्विच एंड वी कैन ओपन द बेड्स। इन द सेम मैनर जो टेक्नोलॉजी पहले फायर और वाटर के बेस पे काम करता था, अभी वही कोल और आयरन के ऊपर काम कर रहा है। इस तरीके से हम एक फास्टर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर देखे जा रहे हैं। वाई? इट इज़ ड्यू टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग। तो एक पर्टिकुलर स्टेज आ जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट जो है सेल्फ मोटिवेटिंग का काम करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल वी सी इन द परसेंटेज एग्जाम्पल, 60% का स्टूडेंट जब 90 तक पहुंचने की कोशिश करता है, धीरे धीरे 60 से 70 पहुंचा, 80 पहुंचा, अब उसके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आने लगता है। He considered that he can do it and slowly he starts to do it by his own and he start motivating himself and he goes for that development। फिर वो अचीव कर ही लेता है। In the same manner एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद हर एक कंट्री जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है वो सेल्फ मोटिवेटिंग के और देखने को मिलता है। Here we are completing up the characteristic of the economic development. So now let us move on with the further portion of the chapter, which means the limitation of the economic development.
एज यूजुअल वी डिस्कस, जब हम कोई किसी एडवांटेजेस देखते तो उसका कुछ लिमिटेशंस तो होगा. सो लेट अस सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Economic development indicates the progress of a nation. It shows the economic scenario, but in real sense, it cannot discuss the human development. It cannot become the index of human progress. Economic development के अंदर हमने बार बार एक नेशन का प्रोग्रेस होता है इसके बारे में तो बात किया, बट ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिनारियो रियल सेंस में कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस नहीं करता है. एक इंसान कितना डेवलप होता है उसके बारे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात नहीं करता है. इवन इसको एक ह्यूमन प्रोग्रेस के इंडेक्स के तरीके से भी हम देख नहीं सकते. बाय दिस इज बीन सेड वी सीन दैट द साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स आल्सो डेवलप, दैट इज बीन सेड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जबकि उसको एक ह्यूमन इंडेक्स की तरह हम यूज नहीं कर सकते. Second point, economic development cannot be measured as economic growth. It is very difficult to measure economic development. Economic development includes those changes that have happened in the society. It is very difficult to derive a measurement for this. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को तो मेजर कर सकते हैं, ऐसा बोला गया था. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ये देखा गया, तो मेजर होना चाहिए ना. नो, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग है, इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, ये माना जाता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर चेंजेस देखा जाता है, सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आई है उसके ऊपर, जैसे हॉस्पिटल कितने बने, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है, वो कंट्री कितने क्वालिटेटिवली चेंजेस देखे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें देखा जाता है. बट इसका मेजरमेंट लाना थोड़ा मुश्किल माना जाता है. थर्ड पॉइंट, when economic development takes place, the standard of living of people improves. Through economic development is taking place in India today. There is not much improvement in the standard of living of the people, and therefore we cannot say the economic development means improvement of the standard of living. तो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता है, लोगों की रहने की, खर्चे की, ये सारी चीज़ें भी डेवलप होती है, ये मानते. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इंडिया के अंदर आज हो रहा है, आजकल इंडिया के अंदर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया भी इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पे तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा हुआ ही हम बोल नहीं सकते. इसीलिए हम ये डायरेक्टली ये बोल नहीं सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना. बढ़ता तो है बट बहुत ही लो लेवल पे बढ़ता है, ऐसा हम बोल सकते हैं रियलिटी प्रैक्टिकल वे में. So students, until here today we are going to keep it up. I hope you all have understood that. Let us have a short revision of the portion that we have seen today. What we have seen today? So today we have seen about the economic development. Economic development का मतलब जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंज देखा जाता है उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है. यहाँ पे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाई जाती है, आउटपुट भी बढ़ाया जाता है, नेशनल इनकम भी बढ़ाया जाता है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाया जाता है, इसलिए इसे एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस माना जाता है. रदर देन दैट वी कैन से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ process which is undertaken by a developing country to attain the stability of the economy. After that, we have seen in a very detailed manner about the definition of the economic development, in which it has been considered that if any country is doing the development of the quantitative and qualitative change, then it is considered as the economic development. So economic development includes the economic growth also, economic welfare also, and economic process also. Even we have seen the Matchulap and GM Maris. Rather than that, we have seen about the Michael Toledo definition of the economic development. After that, we have detailedly seen about the characteristic of the economic development, in which there were 7 points. First one was economic development is a quantitative and qualitative change. Second one, it is a continuous process. There is a change in the demand. Fourth one, we can say that labors become more dynamic. Fifth one, we can say that increase in the capital formation.
Sixth one, we can say that even there is an technological change. And seventh one, we can say that the last step is a self-motivating step for any country. So after that, we have seen about the limitation of the economic development, in which first of all it says that the standard of living is been increased. In that manner we see in economic development. But actually country like India has not seen the standard of living increased in the people in a very more level. So it cannot be said directly that the economic development means the standard of living's improvement. Second, that we can say that economic develop considers the measurement of the economic growth, but we cannot match up the both of the things. So economic development is a part different, and we cannot measure the economic development because it is little different. We cannot show how the progress has been seen in the overall level, but it is attaining somehow. Third, we can say that there is a quantitative change and qualitative change in the social structure, but we cannot use it as a human index progress numbers. So here the limitations are being ended up. So students, I hope that this video was an interesting video for you all. Rather than that, I hope that you all like this video. If you like this video, then like the video, comment on the video your UID number, and share this video to your friends of 12th standard. Hope that you all are fit, fine and safe at home. Until the next interesting video is not coming, wear the mask, take the safety precautions, stay at home and watch the economics video in a very regular manner. Jai Hind and Jai Bharat to everyone.